See, global market में last एक साल में continuous hike has come. And India also have rise interest rates continuously. And despite global market going through a tough time, Indian market outperformed last year. I think 2022 में I think India के लिए एक ही market global market में अच्छा perform किया है. Whether it is on equity market, bond market, interest rate front, हर चीज में Indian अच्छा किया है. See, एक तो SIP एक तो नया way of investing सबके पास मन में अभी आ गया है. Therefore, SIP is something will be the way of investing for everybody. कोई भी अगर मेरे को अगर पैसा डालना है, I would also prefer to put money through SIP and STP route rather than going for lump sum route. Therefore, वो मेरे हिसाब से culture बड़ी अच्छा change हो गया है, which in my own belief will continue. See, अब small and mid cap में is there any merit for a small and mid cap का पैसा डालने के लिए? There is a merit क्योंकि our market is becoming bigger and bigger, larger and larger. So I think if you experience equity for a long period of time, one on the return side, second is on safety side. In the sense your money is always there, you can see your money, your assets you can monitor it, and you can see your value on a day-to-day basis. And कभी आपको चाहिए निकाल सकता है. अगर बात there is no other cost which is involved except the running cost. If you have to draw a parallel in all these areas and real estate, you have to just assume that all these things I'm saying for mutual fund, same benefits accrue on real estate or not. For example, a lot of people buy apartment as a second house, third house, they do buy. But you must assume that there is a maintenance cost, there is a depreciation cost, and there is a rental income that you get there. अगर rental भी अगर दे दिया है, जो पैसा आप जहाँ डाल रहे हैं एक्चुअली घर खरीदने के लिए, उसके सामने जो रेंटल इनकम आता है, दैट विल बी अबाउट 2% or 3% ओनली. नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय ओन इन्वेस्टमेंट जर्नी हैज बीन वन रिमेनिंग पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वर्ल्ड में डर होना नहीं चाहिए. अगर डरते काम करते रहेंगे then there will be issue. Second is when you take decisions, some decisions go wrong, and that doesn't mean I should sit and then cry the decision has gone wrong, therefore I should completely move away. There is another lesson, so you need to have correct it. Hello friends, मेरा नाम नम्रता अरोरा है and welcome back to yet another exciting episode of Mutual Funds की बात. Like you all know कि Mutual Funds की बात में हम Indian and global economic conditions के बारे में, commodities, stock market and of course mutual funds के बारे में बात करते हैं. और हर episode में हम एक renowned personality को लेके आते हैं, someone with a lot of experience, someone with a lot of knowledge in the mutual fund space. Today we have with us Mr. A. Balasubramanian. He's a very well-known person in the mutual fund industry. Mr. Balasubramanian is the Managing Director and Chief Executive Officer of Aditya Birla Sun Life AMC Limited. He's a stalwart of the mutual fund industry and he brings with him over 3 decades of rich experience. He's been associated with the organization since 1994, and prior to assuming the role of the CEO in 2009, Mr. Balasubramanian served as a Chief Investment Officer from 2006 to 2009. Managing Director और CEO Mr. Balasubramanian जो है करीब 3.1 lakh crores in assets under management देखते हैं. Before joining ABSL AMC in the year 1994, वो GIC Mutual Funds के साथ भी काम कर चुके हैं, Can Bank Financial Services and Pandit & Company between 1989 and 1994. Mr. Balasubramanian has been awarded the CEO of the Year title by Asia Asset Management in 2018 and 2020. He's been awarded Chairman's Individual Award by the Aditya Birla Group for being an outstanding leader in 2015 and for being a leader of leaders in 2018. Mr. Balasubramanian जो है बहुत सारी key industry bodies के साथ भी associated हैं. He's been on the board of AMFI, that's Association of Mutual Funds in India, since 2009. और वो Vice Chairman of AMFI भी रह चुके हैं from 2015 to 2016. और 2016 से लेकर 2018 तक he was also the Chairman of AMFI. He's been reappointed as the Chairman of AMFI 2021 and is also the ex-officio chairman of AMFI's Financial Literacy Committee. He is a governor on the Board of Governors of National Institute of Securities Markets NISM and member of the Advisory Committee of the SEBI Investor Protection and Education Fund IPEF. Mr. Balasubramanian ने जो है एक advanced program complete किया है from Indian Institute of Management Bangalore and from Harvard Business School. He holds a bachelor's degree in science, mathematics and a master's degree in business administration from Global Next University. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds Ki Baat. Today we have Mr. A. Balasubramanian with us. So, Bala, let's get started with the questions, okay? So, अगर हम 2022 की बात करें, it was quite a painful year for many investors, right? हमने बहुत सारे pain points देखे, inflation being the highest pain point. And, to combat inflation, of course, सारे जो major central banks थे across the globe have been increasing the interest rates. पिछले एक महीना हमें लगा कि शायद, has been a little sorted and the worst was over.
बट नाउ अगर हम देखें तो यूएस फेडरल रिजर्व हैज गिवन फ्रेश सिग्नल्स कि देयर वुड बी एन इंटरेस्ट रेट हाइक, और जिसकी वजह से जो एशियन स्टॉक मार्केट्स हैं वो काफ़ी नीचे गिरी हैं. तो व्हाट इज योर व्यू रिगार्डिंग दिस ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली? नहीं, first of all, thanks Namrata for having me part of the discussion today. So it's the way one should look at it. See, global market में last एक साल में continuous hike has come, and India also have rise interest rates continuously. And despite global market going through a tough time, Indian market outperformed last year. I think 2022 में I think India के लिए एक ही market global market में अच्छा परफॉर्म किया है, whether it is on equity market, bond market, interest rate fund, हर चीज़ में इंडियन अच्छा किया है. Whereas global market में बहुत गिराई हुआ था, mainly because of the substantial rise that came on the Fed rate, and then Europe also rise interest rate. Japan का भी जो बैंड जो बढ़ा दिया था उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा लाफ आ गया था. China was completely in a different area. Therefore, that is being the case. I think the way I see is, as it stands today, the पहले जो fear था that interest rate hike will be substantial, 70 basis point US में, India में 50 basis point का cycle में चल रहा था. I think India में I think our own belief is that there will be another 20 basis point rate hike. That will be end of the rate hike cycles. I mean US में भी another 50 basis points hike होने के बाद it will be the end of the rate hike cycles. क्योंकि the हिसाब से देखना actually 5.1% is the terminal rate for US. इंडिया के लिए 6.5% is the terminal rate we have to take. अगर वो बेसिस में करें तो ओनली मार्जिनल हाइक वुड कम, देयरफॉर मार्केट में हमेशा डिस्काउंट हो ही जाता है. सो जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी जो है आई थिंक इंडिया के लिए फ़ायदा हुआ एक्चुअली लास्ट ईयर, बट शायद ये साल वो फ़ायदा शायद नहीं होएंगे क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इतना अंडर परफॉर्मेंस आ गया है. वैल्यूएशन उसकी वजह से थोड़ा इंडिया का कंपेयर करने से थोड़ा सस्ता भी दिखता है एक्चुअली. देयरफॉर इंडियन मार्केट आवर ओन बिलीफ इज will go through a consolidation period. You will see some rally coming in the US market. Nasdaq could rally, China market could rally, Hong Kong could rally, क्योंकि बहुत इतना जोर से गिरा है, so उसका वजह से थोड़ा सा अब बढ़ना पड़ेगा. So whereas Indian market having performed very well, we will probably see plus or minus 5-7% kind of movement as far as Indian market concerned. But interest rate cycle को जो fear जो होता है मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके interest rate hike cycle से निकाल के people move into इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप फॉर द बोरोयर्स पॉइंट ऑफ व्यू. आई थिंक ये साल शायद बोरोयर्स के लिए, अगर मैं कंपनी रन चला रहा हूँ एक्चुअली मेरे को इंटरेस्ट कास्ट पहले जो 9% मिलता था आज के दिन पे अगर बैंक में जाके बोरो करेंगे 10.5 कोट करेंगे. सो दैट इज व्हाट आई सी हैपनिंग दिस ईयर. Okay, great. So nothing much to worry about then, I guess. Yes, exactly. Okay, so आपके लिए आई थिंक हमारे पास ज़्यादा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फंड्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. सो अगर हम अगेन 2020 की बात करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने काफ़ी सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड किया था टू इंडियन एक्विटी मार्केट. म्यूचुअल फंड SIPs ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, स्पेशली जब FIIs पुल आउट कर रहे थे फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स. SIP जो इनफ्लोज हैं उन्होंने ऑफ कोर्स इट्स वी आर सीइंग एन ऑल टाइम हाई फॉर अ थर्ड मंथ इन अ रो इन दिसंबर 2022. लेकिन अभी डेटा ये भी सजेस्ट कर रहा है कि काफ़ी SIP कैंसिलेशंस हो रहे हैं, एंड इट हैज़ रीच्ड अ 25 मंथ हाई विच इज़ ऑब्वियसली वेरी कंसर्निंग. तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? सी एक तो SIP एक तो नया वे ऑफ इन्वेस्टिंग सबके पास मन में अभी आ गया है. देयरफॉर SIP इज समथिंग विल बी द वे ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर एवरीबडी. कोई भी अगर मेरे को अगर पैसा डालना है, I would also prefer to put money through SIP and STP route rather than going for a lump sum route. Therefore, वो मेरे हिसाब से कल्चर अच्छा चेंज हो गया है, which in my own belief is will continue. See, cancellation and expiry is depending upon the individual's aspiration that is being met. और हमेशा मार्केट में थोड़ा साइडवेज में चलते हैं. अगर एक साल का रिटर्न थोड़ा कम दिखते हैं, जनरली पीपल हैव द टेंडेंसी टू स्टार्ट लुकिंग एट ऐसे में मैं कर रहा हूँ, रिटर्न आया नहीं आया. दैट समथिंग नॉर्मली हैपेंस इन एवरी मार्केट साइकिल आई हैव सीन. सी कैंसलेशन नया नहीं है, पहले भी था कैंसलेशन, एक्सपायरी भी पहले था. बट आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन, सेम पर्सन हु वाज कैंसलिंग इज आल्सो स्टार्टिंग SIP. सो आई थिंक ही मे कैंसल समवेयर, ही विल आल्सो स्टार्ट इन SIP. ऐसा नहीं है दैट कंपनी से निकल जाते हैं, बट ही स्टार्ट सम अदर स्कीम्स दैट नॉर्मली हैपेंस. देयरफॉर मेरे हिसाब से कैंसलेशन अभी थोड़ा सब लोग बोल रहे हैं एक्चुअली वो बेसिस में है, विच नॉट गेट कैरिड अवे, क्योंकि SIP इज समथिंग इट इज़ नाउ गॉन इन दी इन्वेस्टर्स माइंड. ये मेरे को अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनना है, लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना है पहले,
उसके बाद वो बेसिस मेरे को विदाउट लुकिंग एट द मार्केट फ्लक्चुएशन क्वाइटली सेव करके पैसा भी बनना है लॉन्ग टर्म में टू मीट माई लॉन्गर टर्म गोल्स. नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड एसआईपी का थ्रू ही मेरे को करना चाहिए. So therefore, cancellation is something, it is individual choices. I would also, since a lot of listeners will be there, cancellation कभी करने का नहीं है क्योंकि people think actually that ये फंड से निकाल के दूसरे फंड में जाकर रिटर्न ज़्यादा आएंगे. Market is the longer term basis में it's a good market gives a very good averaging हो ही जाता है. I think कभी अच्छा कोई करता है कभी खराब करता है. खराब करता है that doesn't mean is bad. जो अच्छा करता है doesn't mean is very good actually. So this is something I think market actually great levelizer. अगर वो समझ के एस में करेंगे then you don't need to move from one to others thinking that other side is always green only when we know actually and look from the other side whether it is green or not. So वो basis में एस में हमेशा करना चाहिए. Therefore I don't get too much worried about these cancellations and so on and so forth. Yeah. You know, like we always say कि एक सबसे बड़ा benefit SIPs का होता है rupee cost averaging, and you know that happens over the long term. So you know, Sure. लेकिन I truly believe you know, I'm sure you know that आज के टाइम में SIPs के लिए awareness बहुत ज़्यादा है. बहुत सारे लोग you know they are looking at SIPs in a big way, like you rightly said. So Correct. which is true. इसके लिए Okay. एस कैंसिलेशन का ज़्यादा अवेयरनेस बनना नहीं चाहिए क्योंकि once they know that I can also stop my investment, they will Yeah. rather choose that options rather than investing. I think उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य is actually to make investment for long term. Long term. Short term fluctuation should be seen as a friend, and little bit of underperformance on your SIP should not make you worry. As you rightly said, rupee cost averaging take care of that. Therefore, जो आपका किधर फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है एक्चुअली, as long as money is meant for long term, ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से SIP के इन्वेस्टमेंट के ऊपर. Absolutely, absolutely. Okay. अब I think one of the very important strategies जो हम अपने portfolio में adopt करते हैं वो हम you know we invest in asset classes जो negatively correlated होती हैं, जैसे कि equity और gold हो गया, they're negatively correlated, या फिर equity debt हो गया, and you know these kind of combinations provide that protection to our portfolio. तो आजकल अगर हम देखें तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो हैं वो तीनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं. तो आपका व्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन फंड्स को देखते हैं एज अ प्रोटेक्शन इन फॉलिंग मार्केट्स, राइट? सो दैट्स वन. एंड ऑल्सो किस तरीके के इन्वेस्टर्स को ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में? Yeah. See, multi-asset allocation funds में क्या होता है? Actually, it's invest in all the 4 asset classes or 3 asset classes, which is equity and fixed income asset class और गोल्ड एंड सिल्वर. ये तीनों गोल्ड एंड सिल्वर भी आज के दिन में इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू द म्यूचुअल फंड ETF के थ्रू. सो दिस आर 4 asset classes. अगर आज के दिन पे अगर देखते हैं कोई भी आप asset class देखते हैं, इक्विटी डजंट गिव यू अ लीनियर रिटर्न. इट एक्चुअली गिव्स यू रिटर्न विच एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग. But आज के दिन पे the view on equities is going to be sideways. Maybe you'll not get the same return that you have been getting for all these years. Therefore, you'll see some moderation in the expected returns. So आज के दिन पे अगर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखते हैं और इक्विटी का इंटरेस्ट रेट एक्चुअली मेरे हिसाब से ज़्यादा है एक्चुअली कंपेयर टू इक्विटी एक्सपेक्टेड रिटर्न. द रिस्क जो टेक इक्विटी में जो लेते हैं फिक्स्ड इनकम में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं. देयरफॉर फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास कम्स एज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड. दूसरा एक एक्चुअली दैट गोल्ड एंड सिल्वर जनरली इज कंसिडर्ड एज ए प्रॉक्सी टू डॉलर इन्वेस्टिंग. तो अगर डॉलर का आज के दिन पे जो स्ट्रेंथनिंग का पहले था, नाउ इट बिकम वीकनिंग ट्रेंड. दैट मीन्स इंडियन करेंसी विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन डॉलर वीकनिंग. दैट्स व्हाई आई थिंक नॉर्मली हैपेंस. अगर ऐसे समय ये साल अगर एक्सपेक्ट करेंगे, नेचुरली गोल्ड एंड सिल्वर शुड आल्सो आइडली स्पीकिंग डू वेल. इन एडिशन अगर इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ा आ गया है, देन सिल्वर एज ए कमोडिटी, इंडस्ट्रियल कमोडिटी आल्सो शुड डू वेल. सो इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट फंड में आते हैं, which is invest in all the 3 asset classes. Money manager will choose between all the 4 depending upon which asset class to go, which common investors उनको choose करना बहुत मुश्किल होगा. Therefore, multi asset class fund keep retain the equity as a status, which by investing in 60% equity, and for me fixed income gives a cushion, and silver and gold gives you in addition to that asset allocation में return भी उसमें आ ही जाते हैं. That's why multi asset allocation fund could also be considered as part of the any investor's portfolio. But the way I think investors का चलना चाहिए, equity is for long term. Multi asset class fund is actually gives you solution these kind of market volatile scenario में आपके लिए solution आ ही जाता है. Therefore आज के दिन पे favorable is actually multi asset allocation fund and fixed income funds. So it changes with the time. But multi asset allocation fund will remain as a permanent theme भी बन सकता है. बट फिर इसका टाइम होराइजन क्या होना चाहिए मल्टी एसेट एलोकेशन का?
जो इक्विटी में जो टाइम हॉरिजन जो डालते हैं 5 साल का और 10 साल का, मल्टी एसेट फंड का भी ऐसे आपको चल के समझना पड़ेगा, क्योंकि 60% तो इक्विटी में जाए, चाहे इक्विटी में इन्वेस्ट हो ही जाते हैं। So, अगर 60% इन्वेस्ट में हो ही जाते हैं, बैलेंस 30% कम्स इन बिटवीन फिक्स्ड इनकम एंड गोल्ड एंड सिल्वर, that asset allocation is also can be a permanent asset allocation in anybody's portfolio. Okay. So any kind of investor can look at investing in multi-asset allocation. Exactly. Okay, perfect, sure, okay. तो अब अगर हम एम्फी का 2022 का डेटा देखें, इट्स सेड दैट मिड एंड स्मॉल कैप जो फंड्स थे उन्होंने काफी इंटरेस्ट देखा इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022, अट्रैक्टिंग हाईएस्ट इनफ्लोज अमंग्स द इक्विटी इनफ्लोज। तो आपको क्या लगता है कि जब मार्केट करेक्शन होता है, देन आर दीज द राइट फंड्स टू बी इन्वेस्टिंग इन? See, स्मॉल एंड मिड कैप में इज एनी मेरिट फॉर स्मॉल एंड मिड कैप का पैसा डालने के लिए? देयर इज अ मेरिट, क्योंकि our market is becoming bigger and bigger, larger and larger, and over a period of time, Sensex assuming gives X return, small and mid cap ideally speaking it should give about 4-5% return higher than the Sensex return. अगर नेगेटिव भी है ज़्यादा भी करेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बीटा जोनों में आई थिंक बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। आज के दिन पे हम लोग जो देख रहे हैं, इंडिया का जो एक्सपेक्टेशन है to do very well in the global space and an economy, become a large economy and becoming a large capital market, अगर वो उम्मीद में अगर चलते हैं, the naturally small and mid cap companies should do well, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत स्टेबल है and economic growth is coming back, therefore more and more people actually to participate, therefore there is a merit, but one should not just go by एक साल बहुत आगे, क्योंकि one should also assume but एक साल ज़्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में आया, क्योंकि पास रिटर्न में अगर देखते हैं स्मॉल एंड मिड कैप में अभी अच्छा दिखता है। चलिए इन्वेस्टर्स का एक ही प्रॉब्लम हो जाता है, पास रिटर्न का देखे वो हर्ड मेंटालिटी आके वो बेसिस में पैसा लगाना शुरू हो जाते हैं, दैट इज वे आई थिंक मनी फ्लो हैज नाउ कम इन। बट हैविंग सेड दैट, इज देयर एनी मेरिट? देयर इज अ मेरिट, बट इज द मेरिट फॉर 7 ईयर इन्वेस्टमेंट, 10 ईयर इन्वेस्टमेंट? यस। इज द मेरिट फॉर 1 ईयर? प्रॉब्ली नो। अगर एक साल का समझ के अगर आएंगे, अगर मार्केट में कभी भी मार्केट में इतना मार्केट चलने के बाद मार्केट में क्रैश भी आ सकता है, when it comes the sector that get hit the maximum is small and mid cap, then you start cursing yourself. Therefore आप टाइम समझ के कितना साल के ले रहा हो वो समझ के अगर आएंगे, स्मॉल एंड मिड कैप में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। So again, like it has to be a long term horizon, Exactly. time horizon. लेकिन लार्ज कैप से भी ज्यादा होना चाहिए in terms of time horizon, या at par with large cap in terms It of? should be longer. अगर लार्ज एंड मिड कैप का अगर देखते हैं 3 to 5 years का टाइम horizon लेते हैं, then it has to be 7 years and 8 years. अगर लार्ज एंड मिड कैप के लिए 10 साल के लेते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप के लिए you can keep up to 10 years plus actually. Yes. Yeah. Okay. So what I am saying is the real value on small and mid cap will come only if you hold for long term. See, शॉर्ट टर्म में आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म में आया नहीं सकता रिटर्न, बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आके अगर आप इधर उधर चेंज करते रहेंगे, विच एनी नो कस्टमर्स कैन डू इट, सो देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज हैव अ लॉन्गर टर्म टाइम horizon. Yeah. Especially I think with small caps investors काफी short term horizon ही देखते हैं, they invest in short term for a small cap funds for a short term time horizon, which as you rightly said is not the right strategy to look Exactly. at. Yeah. Okay. So yeah, I remember talking to many first time investors और उनका व्यू हमेशा ये रहता है कि हमें ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा रहता है, राइट? And so they look at funds like sectoral funds and thematic funds. तो अगर हम दोबारा डेटा देखें तो thematic funds और sectoral funds जो हैं, they were the most popular category amongst equity investors in 2022. तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनको सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? लाइक व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू दीस फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स इन रिलेशन टू सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स? See, first time investors ideally speaking should come into the balance advantage fund, क्योंकि वो इक्विटी का भी उसमें थोड़ा फ्लेवर है और फिक्स्ड इनकम का फ्लेवर है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रहते हैं, इट इज़ इन द रेंज ऑफ अबाउट फिक्स्ड इनकम से थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, दैट्स वे दिस बिल्ट. Any first time investors they should always come into some funds which doesn't take too much of risk, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम अगर आके बिना रिस्क समझ के अगर कोई भी फंड में आ गया एंड बाई एनी चांस वो फंड्स का अगर थीमेटिक का अगर वो थीम निकल गया, लाइक कमोडिटी स्पेस में इतना वॉलेटिल होगा, पीपल ऑल्सो सी गुड पीरियड, बैड पीरियड. अनफॉर्चुनेटली बैड पीरियड स्टेज विद देम फॉर लॉन्ग एंड देयरफॉर दे से नहीं पैसा लगाया था एक्चुअली पैसा इसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में और कमोडिटीज फंड में पैसा मेरा गवाया हो गया, then he actually carries this impression for long. Therefore, from first time investors should actually choose these kind of funds and then go to the core portfolio, what we normally call it flexi cap fund, large cap fund, and balance advantage fund. That's what normally we say. But thematic may, I think there are two type of thematics are there. One is thematic in nature but structurally growth stories. Basically consumption agar theme like there are many companies are there. India is a consumption country, and therefore such kind of thematic funds can be looked at it. Absolutely no issues even for a first time investor, क्योंकि they invest in diversified companies but in a certain drivers of the Indian economy. They will remain as a large component in Indian economy, like banking financial risk fund. Here thematic है, but they will remain as a proxy to the economy. They actually represent the country at all point of time. ऐसा नहीं है that ये सब 2020 में करेंगे 2020 में निकल जाएगा, ऐसा नहीं है. But one should avoid those themes which are more short term in nature. In the sense, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बार बिल्ड हो गया है, उसके बाद क्या है? अगर कमोडिटीज में एक बार ऊपर नीचे हो गया, उसके बाद नीचे हो गया है, उसके बाद क्या है? So these are some of the thematic kind of funds. Investors' point of view, very difficult to fathom the volatility. Therefore, you should choose in the thematic funds, which is a diversified equity fund, but focus on certain larger component of the drivers in an economy. So that is the way one should look at, like banking financial risk fund is there, digital India fund is digital fund is also a good thematic fund. क्योंकि आप कुछ भी आप करें, but global में spending on IT is only going to go up. And IT companies will remain as an major integral part of the whole all economy, not just India, world economy. But उनके लिए will remain for multiple generation. But उसमें kind of funds I think you can invest. I'm not saying one should not, but one should go in the respective order. As I mentioned, balance advantage fund. Yeah, then diversified equity funds in the large cap, flexi cap, and balance advantage fund. Then go into the thematic category. So basically what you're saying is if you're a first time investor then ज़्यादा risk नहीं लेना चाहिए because अगर आपका experience बुरा हुआ तो फिर you will carry that experience with you for the rest of your life. Correct. Which may not be a right thing because आपने सही experience ही नहीं लिया है Exactly. at a younger age. Yeah, correct. Yeah. Correct. Okay, great. Okay. इसके लिए वो डिसिप्लिन जरूरी है, दैट डिसिप्लिन जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, एंड क्या पर्पस के लिए आ रहा हूँ वो जरूरी है. फॉर एनी फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट के लिए हमेशा जरूरी रहेंगी. So अगर हम अब अगर हम थोड़ा मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करते हैं, देयर इज अ जनरल कंफ्यूजन. आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को इनका डिफरेंस भी नहीं पता चलता है. मल्टी कैप्स वी ऑल नो कि उसमें मिनिमम 25% एलोकेशन रहता है टू ईच ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल, एंड वेयर एज फ्लेक्सी कैप में इट जस्ट इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप्स. तो एक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, आपने अभी हमें बोला था कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर दे शुड स्टार्ट विद बैफ, लेकिन फिर कोर पोर्टफोलियो फंड्स देखना चाहिए विच इज फ्लेक्सी कैप फंड्स. लेकिन can you elaborate a little bit more on multi cap, flexi cap और वो first time investor के portfolio में क्या role play कर सकते हैं? Yeah. See, I think what has happened in the last few years, ये हमेशा एक confusion पहले रहते थे actually. The flexi cap definition आपका और मेरा सेम रहेगा क्या? हमेशा पहले क्या जो जमाने में ये दोनों सेम नहीं रहता था. Money manager will decide my flexi cap is actually has so much definition, whereas somebody else you ask he will say मेरा definition ऐसा है. अभी एक अच्छा काम हो गया म्यूचुअल फंड में, यूनिफॉर्म डेफिनेशन आ गया. आपसे भी पूछें आपके भी आंसर सेम रहेंगे, मेरा भी आंसर सेम रहेंगे. दैट्स वे मनी मैनेजर विल बिहेव. द डिफरेंस बिटवीन मल्टी कैप एंड दिस थिंग्स, मल्टी कैप हैज टू हैव 20% large cap, 20% mid cap, 20% in small cap. So that is the way very clearly defined. Therefore, money manager's point of view, we cannot say I will not invest in mid cap. He has to go and find winners in the mid cap who won 20%. He has to go and put the मेहनत करके उनको 20% स्मॉल एंड मिड कैप में डालना है. दैट इज हिज उसका कर्तव्य है. Whereas the case of flexi cap fund, he can choose to invest all things in large cap names. What do you mean by large cap? The top 100 companies in India is considered as a large cap. So in terms of market cap. So market cap हमेशा चेंज होते रहते हैं. He can choose to invest in large cap, he can choose to invest in mid cap, he can choose in small cap. The money manager can choose. The money manager can make actually huge difference. उनके पास freedom ज़्यादा है. In the flexi cap fund, किधर किधर उनको पैसा बढ़ने के लिए मौका मिलता है, you can go and invest. That flexibility, that's why it's called flexi cap fund. Whereas multi cap fund में, while the flexibility is there in each of the category, but each category is clearly defined. 50% आपको large cap में रखना है, उसको ऊपर नहीं रखना चाहिए. So that definition which is there. Therefore, those who are looking at small and mid cap kind of schemes can also look at multi cap because of this reason. Yeah.
Yeah, because उसमें आपको 50% allocation तो मिल ही जाएगा in mid cap and small cap space if you invested Exactly. in a multi cap fund. So Exactly. compulsory है, so not much of an option there. Yeah, Exactly. Exactly. great. Okay. Okay. So, अगर हम hybrid funds की बात करें, balanced advantage funds, which you spoke about, of course, is a good fund to have in our portfolio. लेकिन जो retired investors होते हैं, क्या वो balanced advantage funds में invest कर सकते हैं? Can they then look at an SWP option for regular income? I mean, what is your take on this? Then definitely yes. See, एक तो हमेशा I've seen hybrid funds में balance advantage fund which generally invest in equity up to certain percentage, बाकी fixed income में डालते थे. So that I think has now been established quite nicely that you'll have equity exposure moving depending upon the valuations and the market volatility and so on and so forth. आज के दिन पे I think that is very well established. And fixed income also when the interest rate rises, आज के दिन में interest rate is raised, has gone up, therefore उसका भी क्वेश्चन मिल जाते हैं. Therefore anybody who looks at very stable longer term investing, ज़्यादा मेरे को रिटर्न भी नहीं चाहिए, एकदम नीचे भी नहीं चाहिए, I think that kind of investors, hybrid funds are always the best option. Balanced advantage fund is one option today available for investors. As you rightly pointed out, anybody who wants actually monthly income. See, mutual fund doesn't give monthly income. Mutual fund में हमेशा एक समझ के चलना चाहिए. We don't give any income. Investors का ही पैसे we actually give it in the form of a either dividend from the NAV or in the form of a withdrawal. The best option in mutual fund to meet your monthly requirement is the withdrawal plan. That is what SWP, SIP का opposite is SWP. I think कोई भी जिनका से not a rocket science. आपका इतना जरूरी है महीने का. अगर 25,000 रुपया का आपका एक्सपेक्टेशन है महीने में आपको पैसा चाहिए बाई वे ऑफ पेंशन, लाइक अ पेंशन, देन आप 10 लाख रुपया, 15 लाख, 20 लाख रुपया डाल के इन बैलेंस ऑटोमेटिक फंड, यू कैन रिमूव 20,000 रुपीज एवरी मंथ. एज लॉन्ग एज इट रिमाइंस द मनी यू कैन कंटिन्यू टू विड्रॉ. एंड सपोज मार्केट में बहुत नुकसान हो गया, उसकी वजह से आपका वैल्यू एरोड हो गया है, देन यू विल हैव द चैलेंज ऑफ वेदर 25,000 रुपया कितना दिन तक आ सकता है. ऐसा एक सवाल उठ सकता है. But invariably, SWPU in balance advantage fund will give you reasonably good experience to the investors. Okay. Okay. So you think it is a good thing then to have to invest in a balanced advantage fund during your accumulation phase, and then you can do an SWP post retirement. Exactly. Exactly. Okay. Well, all right. Okay. So now, बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स हमें ये भी पूछते हैं कि मेरी इनकम बहुत कम है, आई एम अर्निंग 25,000-30,000 रुपीज अ मंथ, and can I invest in mutual funds, right? So basically the question is कि ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका इनकम बहुत कम होता है, क्या वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड एक बड़ा एडवांटेज है, दिस इज मेंट फॉर अ मास. म्यूचुअल फंड हमेशा लोग सोचते हैं इट इज ओनली फॉर द रिच पीपल एंड दोज हु हैव गॉट मनी. ऐसा है ही नहीं एक्चुअली. म्यूचुअल फंड आज के दिन भी अगर एसआईपी में जो देखते हैं, एसआईपी हम लोग जो प्राइड ले रहे हैं, एक्चुअली एसआईपी बढ़ रहे हैं, इतना सब बढ़ने के बाद भी एवरेज टिकट से एसआईपी इज ओनली अबाउट 3,700 रुपीज, 3,500 रुपीज. बड़ा टिकट नहीं बढ़ाया क्योंकि सब लोग छोटा छोटा पैसे डाल के लॉन्ग टर्म को सेव कर रहे हैं. जो 25,000 रुपये का सैलरी किसको आते हैं, दे शुड पुट एनीवेयर बिटवीन 3,000 to 5,000 रुपीज इन द एसआईपीज. एंड आई थिंक द वे दे शुड रन अ टाइट बजट. See, most of the people actually do not run a tight budget. They'll have a spending free will be very high. They'll be somebody will spend thrift. Therefore, जो कमाए तो पूरा खर्चा कर देते हैं. But such kind of people also should keep 3,000 to 5,000 rupees in SIP for investment, as if you are going and actually with your family eating outside और पिज़्ज़ा खाते हैं टाइप्स, वो समझ के अब 1,000 रुपया, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये महीने में, इवन सच kind of people also should put. उसमें जो फ़ायदा जो होएगा उनके लिए वो बड़ा फायदा होगा क्योंकि लॉन्गर टर्म में अगर मार्केट में एवरेज समझ लीजिए 15% का आसपास रिटर्न बन गई है 10 साल में या 15 साल में, उसको जो कंपाउंडिंग एफर्ट जो है, जो इवन 1,000 रुपये डालने वाले कंपाउंडिंग एफर्ट बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट पुट द नंबर एंड से इतना आ ही जाएगा बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू प्रॉमिस. बट उसको जो कंपाउंडिंग एफर्ट जो है म्यूचुअल फंड में उनके लिए बड़ा काम पे आ सकता है. देयरफॉर दिस इज एक्चुअली मेंट फॉर पीपल हु आर अर्निंग 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज और इवन 18,000 रुपीज, 14,000 रुपीज, ये सबके लिए. अगर 500 रुपये डालना हो तो आप डाल सकता है. ओनली थिंग इज आपको 500 रुपये अगर डालना शुरू किया है हर महीने में कंटिन्यूसली विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हेन आई एम पुटिंग मनी व्हाट इज द रिटर्न इज कमिंग इन, एज इफ यू आर स्पेंडिंग द मनी, आप स्पेंडिंग समझ के आप महीने में डालते जाएंगे, यू नॉट द मनी इज स्पेंट, मनी इज नॉट गोइंग टू कम बैक. दैट इज म्यूचुअल फंड. इवन इफ एज्यूम इट इज स्पेंडिंग यू आर बाइंग,
but you can withdraw anytime. So therefore, your money remains safe. That's why I think one has to build that as a habit, and mutual fund is actually a great vehicle for masses. Yeah. Yeah, Just like I always say कि मेरे perspective से जब मैं SIP को देखती हूँ, I think of it as an investment EMI. जब EMI मेरे बैंक अकाउंट से निकलना ही निकलना है, right? I know I have to make sure that it goes out of my account. So SIP, I use SIP in the same form. correct. So that तभी आपका पोर्टफोलियो बनेगा. नहीं तो अगर वो डिसिप्लिन्ड अप्रोच नहीं रहेगा तो it'll not be difficult, it'll not be easy for you to build that wealth. Yeah, exactly, exactly, exactly. Yeah, so true. Okay. तो अगर हम अब पोर्टफोलियो की बात करें, सो लेट्स अज्यूम कि एज एन इन्वेस्टर मैंने अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया है, आई हैव इन्वेस्टेड थ्रू SIPs, आई हैव सिलेक्टेड द राइट फंड्स, लेकिन मुझे कितना रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, या हाउ ऑफन शुड आई रीबैलेंस माय पोर्टफोलियो? बिकॉज आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ अस एज इन्वेस्टर्स फेस, एंड what is the right way of efficiently doing it? तो आपके perspective से, considering you have so much experience, आपके perspective से, can you give us some tips to understand कि हमें अपना portfolio rebalance कैसे करना चाहिए या कब review करना चाहिए, and so on? Yeah. Yeah. Hey, portfolio review, I think you must take into account two things. One is you have to make an assumption you will always have rising income levels. I think most of the people, what they make a mistake. For anybody who start their career, they never make an assumptions. At least they'll have about 10 to 12% increase in my salary over a period of time. Therefore, once your income levels rises and expenditure will बढ़ते जा रहे हैं, but expenditure is, I'm assuming, will not go up as much as your income levels are rising. So अगर वो बेस में करें, you must of course review your investment more from the point of view of knowing whether in the right direction. आपको तो आपको portfolio देखना चाहिए, how is it doing, but rebalancing one should probably consider once in a year or once in 3 years. क्योंकि आप हर बार आप rebalance के लिए सोच के करते रहेंगे, there is high probability you will try and sell the assets which has given the least return, and you'll go after assets which is given the highest return in the past. That is why I am saying in the mutual fund space, those who are done badly doesn't mean that he is bad. Those who are done very good, that doesn't mean he is going to sustain it forever. Nothing happens in ever. I think ultimately long term average में सबको मार्केट सीधा कर देते हैं. So that is being the assumptions. आपको पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग साल में एक बार अटेंशन देना चाहिए, हर 3 साल में. वो भी पोर्टफोलियो रिबैलेंस कैसे होंगे? यू विल रिड्यूस सम इन इक्विटी, you will move into debt. Some will debt to equity. Some money will move from equity to balance advantage fund kind of things. Or you will move from some money from large cap to the mid cap. These are the way you should do allocation as your risk appetite increases. Second, आपको एक देखना चाहिए that your surplus money is actually becoming larger and larger. Then you must actually go to the assets. The way I do a rebalancing is, which is asset class will give you little higher on the basis of expected return. You can always ask anybody next 3 साल में रिटर्न क्या आ सकता है इक्विटी में, अदर उसमें कितना आ सकता है, सेंसेक्स में इतना, लार्ज कैप में आ सकता है इतना, मिड कैप में आ सकता है. आई थिंक द मोमेंट यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न that could come on a 1 year, 3 year, 5 year basis, that can also give you a sense of ultimately you'll go to assets which give you the highest return. Will you go all you put in highest return? Absolutely no. Then there also you'll diversify. You still have some large cap, you'll have some mid cap, but definitely you'll have an allocation to those assets which will give you the highest possible return. But do not put 100% there. So you'll put say 10% increase in allocation, by 2-3% will increase. That's the way to do the rebalancing of portfolio. Because longer term में all assets class gives a more or less similar return in the same order. Like fixed income will give you about 7-8%, gold will give you about anywhere between 5-6%, gold and silver. It doesn't give more than that. And equity will give you anywhere around 12-15%. And if equity give 12-15%, this thing, mid and small cap might give you about 16-17%. So that is the order. Also we should keep in mind, एक बार economic size बढ़ गया एकदम, this return expectation कम होना पड़ेगा. क्योंकि अगर एकदम अपना देश एकदम बढ़ गया, नंबर 3 हो गया in terms of global market, ऐसा समझ के जाना पड़ेगा, रिटर्न एक्सपेक्टेशन also have to be toned down. As the market always developed market versus the emerging market. Once India become developed market next 4-5 years, then मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम करना पड़ेगा. Okay. So I mean, so basically what you're trying to say is कि averaging out हो जाता है in the long term. Yes, Right? exactly. And so that is how you need to I look think at your. best of the money is made. Best of the money is made. My own experience. You put your money in a good asset classes, and then sit peacefully forever. That is where I think best of the money is made. If you take equity as asset class,
आप चिंता मत करो, जस्ट डाल के आप छोड़ दो लॉन्गर टर्म के लिए. The best is the people who have actually made money in the last 25 years are those who have actually stayed invested throughout this period. ग्रेट ग्रेट ओके. सो अब अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें, ऑब्वियसली पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन एक मुश्किल प्रोसेस है, राइट? एंड एट द सेम टाइम अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करें, दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सिंपल प्रोडक्ट होता है फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. तो आपको क्या लगता है कि एज इन्वेस्टर्स हमें व्हाई डू वी नीड डेट फंड्स इन आवर पोर्टफोलियो? तो अगर हम सिर्फ बैंक एफडीज में पैसा डालें, would that not be enough to protect our portfolio? तो हमें डेट म्यूचुअल फंड्स में क्यों डालना चाहिए, या डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? So debt mutual fund I think होना चाहिए. I think there are those who are who want a balanced portfolio. उसका अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, and other product also one should have to limit the downside from the equity market point of view. Therefore fixed income comes. Second is fixed income is also one of the large component of any economy. In the sense अगर companies का अगर ज़्यादा profit बनाना है, and fixed income plays a resource, right? अगर equity के लिए एक resource है, fixed income also is another way of funding my company's growth. Therefore fixed income will remain as a large component of any economy. And interest rate अगर बढ़ते हैं, definitely is an opportunity for investors. The difference between FD and mutual fund fixed income of course mark to market हो ही जाते हैं, इसके लिए price fluctuation जुड़ा रहते हैं. दूसरा है कि कभी कंपनीज का अगर बॉन्ड में किधर डालते हैं उनका डिफॉल्ट हो सकता है, ये सब है. आई एम नॉट सेइंग नो, बट डिस्पाइट दैट आई थिंक इफ वी कम टू द फिक्स्ड इनकम फंड्स विच इज द लार्ज मूवर्स ऑफ एनी इकोनॉमी विच इज बेसिकली द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, अगर उसके लिए कैप्चर करना है, म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी द वे वी कैप्चर ऑन द इक्विटी साइड. And second is equity and fixed income, they are correlated. Whenever interest rates are high, equity market tend to do worst. Whenever interest rates are low, equity market will tend to do better. So when these two are directly correlated, then in your asset allocation also you must have both asset classes. You need to have equity when equity is supposed to do well. You should have fixed income when fixed income is supposed to do well. Right? That's the way you must have allocations. The third aspect is everyone needs a cushion in the portfolio. I think fixed income is actually cushioning. So I think when things are bad, at least you should have one or two of your investment actually doesn't give you sleepless night, which is the one I think in the fixed income space also will come as part of asset allocation. The last but not the least, अगर मैं FD में पैसे डाल दिए, then FD में अगर समझ लीजिए 8% मेरे को रिटर्न मिल रहा है, that 8% is actually taxable at the rate of whatever the nominal tax of the individuals. Today most of the individuals would be the tax rate of about 25 to 35% at the individual levels. Those who are high end income earners will have about 40%. अगर 8% मिला, उसमें 30% भी अगर इंटरेस्ट रेट निकल गया तो वो 2.4% उसमें आपका निकल गया, उतना ही बैलेंस आता है. वेरस म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट आता है. सो आई थिंक एट टैक्स एडजस्टेड बेसिस इफ यू सी म्यूचुअल फंड फिक्स्ड इनकम ऑन अ 3-year basis versus fixed deposit, mutual fund will get higher return than the fixed deposit, and that one plus point is there. Therefore tax is not many people understands, क्योंकि people think actually that I don't pay tax on fixed deposit. They must also remember income tax authorities also will start chasing you if you don't pay the tax on any income that you generate. Therefore वो बेस में adjust करके देखते हैं, fixed income will become one of the component that one must consider. Whether one should invest or not depending upon the risk appetite. अगर long term आपका पैसा है, you don't care market fluctuations, मेरे को तो long term में ही डालना है, then equity can remain as a large component of the portfolio. But as you get say close to about 40, 45, 50, you need also protection for your future. So then fixed income will also play a very big role. The way I mentioned about balance advantage fund, fixed income component also will become like that. I think fixed income component is required anytime to diversify your portfolio, right? Like we say, if you're investing in negative. I'll just give you one example, Namrata. I'll take my own fund example. Yeah. So I've been part of the AMC for the last 28 years. I have seen funds which we launched in the year 95-96, which is Birla Income Plus we launched as income fund. We launched Birla Advantage Fund as an equity fund. And these are the first two funds we launched. If you just look at the last 25 years, 26 years return, equity would be about, say, roughly about 15 or 16%. Whereas the fixed income also gives me 9.5%, 9% return is given. So 9% returns in any order come nahi hai. So in any order come nahi hai. So in an income fund, 9% coming in for the last 25 years. इंटरेस्ट रेट ये समय में लास्ट 25 ऊपर भी गया, नीचे आया, सब कुछ हो गया, इकोनॉमी गिर गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी 9% मिल रहा है, 8.8 to 9% मिल रहा है. दैट इज अ फंक्शन ऑफ फिक्स्ड इनकम का ब्यूटी है.
Equity, of course, does give. I'm not saying no. But fixed income also is not bad if you consider as a long-term investing options. Yeah. And you know that 9% within the long-term capital gains, if you're getting indexation benefit from a tax point of view, is very good It'll be returns. about 8.6. अगर 8.6 8.6, अगर post tax मिल गया है, which which is is it's very not a good. bad proposition for in any consideration. Absolutely. Okay. Yeah, I mean, sure. ओके तो अब अगर हम बात करें कि यू नो डेट की बात करें, लोन्स की बात करें, आई थिंक जिस कोई भी बोरोवर जो होता है जिसके पास लोन होता है, दे वांट टू फिनिश देयर डेट एज सून एज पॉसिबल, राइट? क्या हम म्यूचुअल फंड एसआईपीस को यूज कर सकते हैं टू रीपे आवर होम लोन्स फास्टर? तो इफ इट्स पॉसिबल देन हाउ कैन दिस बी डन? Yeah, I think it's very. I think the power of compounding an SIP. If I have to take that 5 साल में or 10 साल में अगर ऐसे भी महीने में चलते रहते हैं and the compounding effect of this assuming the cumulative return that could come on that, let us assuming say is about 14 to 15%, and if EMI that you have taken a loan and you pay the EMI, and for which you are taking a loan at 8.5%. 8.5% you are incurring interest, whereas here you are getting a potential return of say 14-15%. So therefore, naturally you are getting a more income. So the more the income that you get on this, I think you will have more accrual coming in. Therefore, as you come closer to your ability to repay, whatever portfolio आपका SIP में बन गया है, that money you can withdraw and then repay your loan also. Repay your loan. So you continue to pay your EMI, you also build your SIP simultaneously. Then as that asset starts growing in at the rate of say 14-15%, the EMI anyway will continue to be at 8.5% unless the interest rate go up quite significantly higher. So I think that interest rate differential, 8.5 you pay, here you get 14% return. The different differential itself will make your value a little larger than what you would otherwise expect. Therefore, that you can withdraw and repay your home loan. This is actually the best way to build the both the ability to repay your loan through the SIP methodology. Therefore, I always tell people, आपका कितना भी लायबिलिटी है महीने का, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम सो ऑन सो फोर्थ, घर का खर्चा सब कुछ होगा, उसके बाद भी आप थोड़ा से SIP में डालते जाएंगे, उसका बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है. So that is the way EMI and SIP have to look at it. Okay, great. तो अब अगर हम यू नो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स की दोबारा बात करें एंड यू नो दे ऑब्वियसली हैव इक्विटी फंड्स इन देयर पोर्टफोलियो, तो एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जस्ट सम बेसिक टिप्स फ्रॉम यू, what are the good funds to have in the portfolio for a first time investor? I know आपने balanced advantage fund बोला था when we had this discussion earlier, but apart from balanced advantage funds, what are the other funds that could comprise a first time investor portfolio? Take the multi-asset allocation fund is one, could also be considered for any first-time investors. Sure. I think hybrid funds, which is you can say aggressive hybrid funds, उसमें भी 65-70% ही equity में डालते हैं, balance and fixed income. So that also another fund can be looked at from the first-time investors point of view. Of course, another fund, of course, in the fixed income space, I think fixed income space में आपको आ सकता है first-time investors. आप एक बार fixed income में आके उसके बाद आपको STP करके आप म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम में डाल सकता है. बेसिकली आई ऑलवेज टेल पीपल, व्हेन यू आर अनश्योर, अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है आप क्या करना है, बट बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, बट अभी तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कैसे करना है, देन कम टू द लिक्विड फंड एंड लो ड्यूरेशन फंड, जस्ट स्टे इन्वेस्टेड फर्स्ट. एक बार आप अंदर आ गया, देन यू स्टार्ट टेकिंग अ डिसीजन मूविंग मनी फ्रॉम वन स्कीम टू अदर स्कीम. इट्स कॉल्ड STP. सो दैट इज आई टेल नॉर्मली पीपल, एक्चुअली बैंक अकाउंट में पैसा रख के ऐसा नहीं दैट म्यूचुअल में नहीं डालना है, आप बैंक में पैसा रख के सेम थिंग विल पुट इन लिक्विड फंड, विल गिव यू मोर और लेस सिमिलर एक्सपीरियंस दैट यू गेट इन सेविंग्स अकाउंट और इवन समटाइम बेटर एज वेल. देयरफॉर वो आपका रिस्क भी उतना ही है, आपको कभी भी निकाल सकता है. एक बार आ गया पैसा आपको लिक्विड में डाल के और लो ड्यूरेशन में आ गया, देन आफ्टर दैट यू कैन ऑलवेज मूव टू एनी ऑफ दिस स्कीम्स. देयरफॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर शुड ऑलवेज थिंक लाइक दिस. But hybrid funds is through which I think first time investors should come, which basically I mentioned about in addition to balanced advantage fund, multi asset allocation That's fund, it. hybrid fund. Yeah. Okay. Right. Okay. Great. So अब अगर हम you know quant funds की बात करें, so quant funds of course they follow a particular set of rules, right? And उसमें investment restrictions रहते हैं to decide कि कौन से stocks जो है portfolio में जाएंगे. Do you think जो quant funds होते हैं they are better than you know actively managed funds? See, they will be seasonal. See, they'll have a seasonality attached to it. In the sense,
Unlike a normal actively managed funds, you will not see seasonality because you will have flexibility to diversify the portfolio, looking at only on the valuation, bottom up stock picking or top down stock picking. Whereas the quant kind of funds, you will apply, of course, various moving parts of the economy, and then how sectors can do better and how sectors can do badly. Basis which you actually try and generate better return by going to those sectors or stocks which can do better than the market. That's the way quant fund model works. We Sure. can call it as a hedge fund kind of model globally. That all works in this kind of manner. But it'll have a seasonality. The market turns volatile. You can also go through a similar pain period. I think as it generates very high return, you can also anything that gives very high return. We have to also make an assumption this is not permanent. So it will go through some volatile period. I'm not saying quant strategy is bad. This is another strategy which exists. But quant strategy beyond a point, believe if you have a size of say very large size, can I be able to actually make the same strategy which I'm having say a smaller size funds versus a bigger size funds? Then as the size become larger, all such strategy will be put to a test. Second is when the market crashes. Let us assuming a market crashes. In the mutual fund space, you cannot actually take a naked short position. So you have to sell your stocks. There will be period where it may also go through some volatile period. So therefore, it has to be put to a test. But definitely, of course, quant as a strategy exists globally. Not everybody can do it, and people don't have capability for quant. And you need to have a very quick action that one has to take. Therefore, such kind of funds globally also is very very limited. But if the question is, should I have an allocation there, or should I have all my money there? I think probably the allocation is the more right model to think, rather than go after it completely. I think one of the big problem in investors' mind, investors also do have a herd, in the sense that return अच्छा आ गया चलो उधर चलते रहते हैं. So that kind of behavior cannot work, because you'll also have to assume where you get a very good experience also will go through a bad experience when the market turns volatile. So I have seen it historically. There are sectors you are bullish because of some regulatory reason, something comes and hits the global market. Suddenly you see a crash coming in, as we've seen in the commodity space last year, and then you will have enough time actually to get out if the size is larger. With a small size, of course, yes, you can. So अब अगर हम if we just look at the last 3 to 4 years, passive funds ने जो है they've gained a lot of significance, right? बहुत सारे investors अब passive investing की तरफ जा रहे हैं. There's a debate कि passive funds में invest करना चाहिए या active funds में invest करना चाहिए. And many investors believe कि जो index funds हैं, they are the best approach for first timers. So what is your view on this? And as an investor, क्या मैं active funds को completely ignore कर सकती हूँ? Should I only look at passive funds? What is your take on that? See, passive funds also will remain. See, passive funds is actually simply replicate the index. It does not have money manager touch. You simply go by what the market is telling you to do. And therefore, passive funds, there is a merit for that asset class. It's now gaining more and more popularity, even in India as well as globally also. The way I see is it should have a mix of both. See, money managers will also make an attempt to outperform the market. That is one of his job. लास्ट 2-3 साल में आउटपरफॉर्म नहीं आया, दैट डजंट मीन दे आर बैड. Yeah, again, market is actually constructed by various component of moving parts of the market. कभी कोई कंपनी अच्छा कर जाते हैं, उसके लिए मार्केट का बढ़ जाता है. But money manager will have a different views on every stocks and every company's sectors. But that I think is the market index when you make, definitely it actually takes away the fund managers view on that. And therefore you as an investors you can stay invested, but over a period of time active managers also try to perform better than the market. Is it ruled out? Is not ruled out. Is it possible? Is possible. As it point of time is happening, is not happening. That doesn't mean it will not happen in the future. So therefore, keeping this in mind, there has to be always composition of active and passive. Even globally, best of the firms promote active funds along with passive. Best of the funds also promote passive along with active. It's a complement to each other. I don't see it's a competition. It's a complement to each other. Complementary to each Yeah, other. yeah. Yeah, I mean, you can't just put all your money in one, category of funds, because active fund managers ka benefit रहता है, right? They Exactly. have the tendency to outperform the index.
which Exactly. in an index fund that will never happen. So Exactly. yeah. See, even our own large cap fund and equity for some time is delivering at par with the index. Now actually delivering little better than index. I think we'll go through the cycles. You go through the cycle. Yeah, Yeah. yeah. Okay. Okay. So अब अगर हम if we just look at the general feeling in terms of real estate, yeah, real estate as an asset class बहुत लोग मानते हैं कि is better than equity, mainly because of it has the potential to give better returns. और काफ़ी लोग जो हैं जैसे लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, सिटीज़ में प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे बिलीव कि हम रिटायरमेंट के टाइम उसको बेच के विल मैनेज आवर रिटायरमेंट. Do you think equity funds too are suitable approach versus real estate? क्योंकि real estate और equity में हमेशा ये debate रहती है कि one is better than the other. So what is your take on this? See, I think if you experience equity over a long period of time, one on the return side, second is on safety side. In the sense your money is always there, you can see your money, Yeah. your assets you can monitor it, and you can see your value on a day-to-day basis. And कभी आपको चाहिए निकाल सकता है. अगर there is no other cost which is involved except the running cost. If you have to draw a parallel in all these areas in real estate, you have to just assume that all these things I'm saying for mutual fund, same benefits accrue on real estate or not. The physical assets, it does appreciate at a compounding of say 8-9%. इन्फ्लेशन से ज़्यादा आई थिंक अप्रिशिएट होते हैं. कभी कभी लैंड अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं होते हैं. अगर गलत जगह पे ले लिया है वो बिल्कुल भी नहीं होता है. अगर एक जगह पे ले लिया एक्चुअली NHA आके जो लैंड खरीदे उसके लिए वो बढ़ गया है, ब्रिज आके उसके वजह से बढ़ गया है. इट्स हैपन्स वन टाइम मार्केट में, वन टाइम करेक्शन हैपन्स इन रियल एस्टेट. उसके बाद कंटिन्यूअस अप साइकिल डजंट हैपन. Therefore, you have to be lucky to make big money. Second, you also run the risk of maintenance. You have to maintain, there is a cost which is involved. Third is actually you also run the risk of whether land you're able to identify after say 10-15 years if you don't actually monitor them properly, right? There are all some other question which comes. There are people who have got different experience. But keeping that in mind, whether you want to go for the assets unless you stay close by and therefore you are buying. There are many people actually struggle. They go and actually buy living in Delhi, they'll go and buy a property in say Goa. Living in Goa, they'll go and buy a property in Mysore. A lot of people actually do such things. But then you run the risk of your assets get spread across the different parts of the country. Then suddenly you actually realize that that you did not validate the exit. Monitoring is difficult. Therefore, real estate is something one should just keep this in mind while buying. For example, a lot of people buy apartment as a second house, third house. They do buy. But you must assume that there is a maintenance cost, there is a depreciation cost, and there is a rental income that you get there. अगर rental भी अगर दे दिया है, जो पैसा आप जहाँ डाल रहे हैं actually घर खरीदने के लिए, उसका सामने जो rental income आता है, that will be about 2% or 3% only. अगर 2% अगर डाल के घर में डाल के 2% लेना है, 3% लेना है, or I put the same money in actually in deposits or fixed income schemes and get 7-8% return, or put the money in equity over a period of time, you get about 20% return or 50% return. So that is where I think one has to consider. At any parameter, आप फिक्स्ड इनकम स्कीम से लेके इक्विटी स्कीम से लेके आप कंपेयर करेंगे, you will end up saying that I think I will be better off actually in these two asset classes rather than going for real estate. And what I'm going to say is probably a little illogical, but मुझे लगता है कि at least I've always believed कि real estate में luck plays a very important role. Exactly. It has nothing to do with numbers, but मुझे लगता है कि luck is very important. Equity में आप logic लगा सकते हैं, आप numbers देख सकते हैं, आप you can apply logic and invest. Real estate में I truly believe luck is playing a big role. So Now I'll give you two examples if it permits. I have personal examples. I myself had invested in on my mother's advice when I was the age of 25. I bought a land at 50,000 rupees of 2,000 square feet land. We call it one plot. yeah, It has given me almost 17 lakh rupees. It gave me money at the end of almost 28 years. sure. And I thought, let me do the math. 17 lakh rupees, got it. Amount is very good. 50,000 रुपये डाला, 17 lakh रुपये आ गए. Amount तो बहुत बड़ा है. Then I did the same. I did what is the annual return that I got it. I got roughly about 11% CAGR return. The same money if I had put, say 50,000 rupiah in the same period 28 years back, that would have given me roughly about 17 or 18% return. See the difference. 7-8% return, that 17 lakh rupees, I would have got almost about 40 lakh rupees. If I didn't have the same money in equity, I would have got 40 lakh rupees, somewhere close to that number. So that is the reality. Many times what happens, we only look at absolute value. 50,000 रुपये डाला 5 लाख रुपए के,
You have to look at it, 5 lakh rupee is actually equivalent to what kind of return that you generate. The moment you start seeing it like this, then you start realizing it, I'll be rather better off into the financial market asset class. Yeah, absolutely. Completely with you on this. Yeah. Okay, so now we'll just quickly talk about your investment journey. हम अपने सारे speakers से पूछते हैं. All our guests we ask this because आप सबने you've done so much, you've achieved so much. You obviously have been investing for so many years, maybe decades. So tell us a little bit about your investment journey in the equity market, so that हमें भी आपके journey से कुछ learnings मिलें. No, first and foremost, my own investment journey has been one, remaining positive and optimistic, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वर्ल्ड में डर होना नहीं चाहिए. अगर डरते काम करते रहेंगे then there will be issue. Second is, when you take decisions, some decisions go wrong, and that doesn't mean I should sit and then cry the decision has gone wrong, therefore I should completely move away. There is another lesson. So you have need to have correct it. I think wherever the failure happens, you have to correct it, and then understand the discipline we are investing is more important. So over a period of time, the discipline is a must. I have been investing through SIPs. I have been investing large pool of money only in equity. Return कभी देखता नहीं actually. कभी funds में डाला हुआ है, पूरा 100% money is there with me. आदित्य बिरला साला mutual fund only. Some funds are done very well. Some funds are done very badly. But that doesn't harm me because I'm investing for long term. So that discipline that I have of not paying too much attention on the return, just invest for long term purpose. Second is continuously make investments in the mutual fund space. These are the two disciplines that I kept. Plus, I don't even see कितना value है, कितना पैसा है, and I don't even look at it. The reason I don't look at it, the moment you see a lot of value is there, you start thinking अभी क्या करना है, move करें, इधर करें, उधर करें, all those things will come. So you'll get into too much of uncertainty in terms of your thinking. This is a simple principle that I apply. Even if buy direct equity, buy a little bit on direct equity, because that should not take away your time and energy in focusing, in removing attention from the work that you are responsible for which you are being paid. And that should be your main focus area. And investment actually should be passive way of investing. Basically, the invest at regular interval, so that goes out automatically. So that you spend enough time on your work life, so that you prosper in that, and your money actually put in the disciplined manner like this, and that also prospers along the side without you noticing it. Great. Thank you so much, Pala. Yeah. Just the last question. Any book recommendations for us? So for investors, first-time investors, or more matured investors, any book recommendations? So I think very simple books, of course, One Upon Wall Street kind of things. Peter Lynch book, very clear in terms of how investment world functions. So ultimately, investment is about common sense investing. I think sometimes we do think actually investment is complicated. That's any simple thing always remains complicated. So investment is actually more about discipline. So One Upon Wall Street kind of things gives you a great sense of how investment world functions, stock market functions, and that's something anybody can read and understand. So I'm not a voracious book reader. For me, I derive all my wisdoms out of my own experience, and I read more of the journals rather than any book as far as investment world concerns. But this one which I, of course, these are all originally we have read, and therefore that's something which I think anytime readable kind of books. Sure. Thank you so much, Bala. It was a great interaction. I had a great time talking to you. So thank you so much for all your time. Yeah. Thank you, Namrata, and thank you for having me part of the discussion today. Yeah. Wow, what a wonderful and engaging conversation that was with Mr. Balasubramanian. I hope all of you enjoyed this particular show, and I do hope you guys are waiting for the next episode. तो क्विकली जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि यूएस फेडरल रिजर्व ने फ्रेश सिग्नल्स दिए हैं कि वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, जिसकी वजह से एशियन मार्केट्स पे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है. सो मिस्टर बालासुब्रमण्यम सेज कि जब ग्लोबली भी मार्केट्स अच्छा नहीं कर रहे थे तभी इंडियन स्टॉक मार्केट वाज डूइंग वेल. तो इसीलिए हमें उतना वी शुड नॉट बी वरीड सो मच. एंड एट द सेम टाइम इंडिया में जो है रेपो रेट हाइक जो है अब खत्म होने को आ रहा है, which is a positive factor. Then we spoke about SIPs, where SIPs inflows have been on a high for 3 months as of December 2022. और अगर हम बात करें SIP cancellations भी जो हैं वो बढ़ रहे हैं for to a 25-month high.
तो मिस्टर बालासुब्रमण्यम सेज कि एज एन इन्वेस्टर हमें उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स SIPs को कैंसिल कर रहे हैं वो जो है दूसरे इक्विटी फंड्स में अपना पैसा और SIPs शुरू भी कर रहे हैं. इफ यू वांट टू यूज SIPs इफेक्टिवली, आइडियली हमें अच्छा इक्विटी फंड सेलेक्ट करना चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पे, एंड देन वी शुड स्टे इन्वेस्टेड इन SIPs फॉर द लॉन्ग टर्म. फिर हमने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में बात करी, एंड कैन दीज फंड्स प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग फॉलिंग मार्केट्स. तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसमें जो कम से कम 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं विद अ मिनिमम एलोकेशन ऑफ 10% इन ईच एसेट क्लास टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर ड्यूरिंग अ क्रैश. तो मिस्टर बालासुब्रमण्यम सेज कि ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, वो इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काम जो है फिर आपका फंड मैनेजर आपके लिए करते हैं. लेकिन अगेन इन फंड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका टाइम होराइजन जो है वो इक्विटी जितना टाइम होराइजन होना चाहिए. Then we also spoke about mid-cap and small-cap funds, and Mr. Balasubramanian says कि these funds can outperform the Sensex. लेकिन जब हम mid-cap और small-cap funds में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें past returns नहीं देखने चाहिए, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लंबे से लंबा होना चाहिए. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि काफ़ी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेक्टरल या थीमेटिक फंड से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं. सो इज दैट अ गुड थिंग? सो मिस्टर बालासुब्रमण्यम सेज कि आइडियली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अपना इन्वेस्टमेंट थोड़े कम रिस्की इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डाला और मार्केट्स क्रैश हो गई तो इस बुरे एक्सपीरियंस की वजह से वो शायद दोबारा इक्विटी में पैसा ना डालें. तो इसीलिए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं दे कुड लुक एट स्लाइटली लेस रिस्की म्यूचुअल फंड्स लाइक हाइब्रिड फंड्स, स्पेशली बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि काफ़ी इन्वेस्टर्स कंफ्यूज होते हैं बिटवीन मल्टी कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स. तो मिस्टर बालासुब्रमण्यम सेज कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं वो दे आर ट्रू टू द लेबल, और वो कम से कम 50% एलोकेट करते हैं टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स. तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा हायर एलोकेशन देखना चाहते हैं वो मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर कोई इन्वेस्टर 25 से 30 हज़ार रुपया महीने का कमा रहा है तो क्या वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो मिस्टर बालासुब्रमण्यम सेज कि म्यूचुअल फंड्स में आप 500 रुपये महीने से SIP की शुरुआत कर सकते हैं इन एन इक्विटी फंड. तो मिस्टर बालासुब्रमण्यम सेज कि अगर आप महीने का 25 से 30 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो कम से कम 2,000 से 3,000 रुपये की आपको SIP करनी चाहिए इन एन इक्विटी फंड टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स. इसके बाद हमने क्वांट फंड्स की बात करी. क्वांट फंड्स बेसिकली फॉलो सेट ऑफ रूल्स एंड इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस जिसके बेसिस पे वो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं. सो मिस्टर बालासुब्रमण्यम सेज कि ये एक अच्छी कैटेगरी है, लेकिन ये फंड्स जो है कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रीम मार्केट वॉलिटिलिटी. और इन फंड्स में जो है अभी जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है AUM वो भी काफ़ी लो है, एंड दीज फंड्स आर येट टू बी टेस्टेड इन द लार्जर साइज. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि काफ़ी इन्वेस्टर्स अपने रिटायरमेंट के लिए लैंड या प्लॉट खरीदते हैं. सो इज दैट अ गुड थिंग? सो मिस्टर बालासुब्रमण्यम सेज कि अगर आपने सही लोकेशन डिसाइड करी है या सेलेक्ट करी है तो अच्छा है, क्योंकि आपके जो रिटर्न्स आएंगे उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने गलत लोकेशन सेलेक्ट करी है तो आपको रिटर्न्स तो उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, एंड एट द सेम टाइम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी आपको बेयर करने पड़ेंगे. सो एट द सेम टाइम जो काफ़ी इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेकंड अपार्टमेंट खरीदते हैं फॉर रेंटल इनकम. तो मिस्टर बालासुब्रमण्यम सेज कि अगर हम रेंटल यील्ड की बात करें इन इंडिया, रेंटल यील्ड इज एज लो एज 2 to 3%, और इससे अच्छा अगर आप वही पैसा फिक्स्ड इनकम या इक्विटीज में डालते तो आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं. उसके बाद हमने मिस्टर सुब्रमण्यम से वी स्पोक अबाउट हिज पर्सनल जर्नी इन एक्विटीज, एंड ही सेज कि अगर आपको एक्विटीज में इन्वेस्ट करना है तो SIPs के जरिए करिए, रिटर्न्स के बारे में उतना स्ट्रेस मत करिए, एट द सेम टाइम स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, दैट इज द की. And in terms of book recommendation, One Up on Wall Street by Peter Lynch is the recommendation given by Mr. Balasubramanian if you want to learn more about stock market. So I hope you guys enjoyed this episode. Please do like the video, share it with everyone, and of course subscribe to the Groww Mutual Fund channel. And thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.